नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। क्या भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता को लेकर के आक्रामक हो गया है? जिस तरीके से कोरोना महामारी आई और WHO से लेकर के UN तक इससे निपटने में नाकाम साबित हुए, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि हर मंच पे भारत इस मुद्दे को उठा रहा है। यह महज संयोग नहीं हो सकता कि SCO की मीटिंग हो या ब्रिक्स की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी मजबूती से इस बात को रखा कि किस तरीके से ऐसी संस्थाओं यानी UN और UNSC में बदलाव की ज़रूरत है, अदरवाइज ये संस्थाएं अपनी साख खो रही हैं। 75वीं वर्षगांठ मना रहा है UN अपनी, सितंबर में शुरू हुआ था और अभी UN की जनरल असेंबली हो रही थी, जहां पे भारत के अस्थायी सदस्य हैं TS त्रिमूर्ति। उन्होंने साफ साफ कहा कि सुरक्षा परिषद एक खराब अंग हो गया है, तत्काल बदलाव की ज़रूरत है। इसके पहले भी भारत ने अफ्रीकन देश और भारत की सदस्यता को लेकर के चिट्ठी लिखी थी। सबसे पहले सुनिए कि TS त्रिमूर्ति ने क्या कहा। I now give the floor to the distinguished representative of India. Thank you very much, Mr. President. We thank you for convening this important debate. You have the support of my delegation for a successful 75th session of the General Assembly. India aligns itself with the statements of St. Vincent and the Grenadines on behalf of the L69 and of Brazil for the G4. We also endorse the statements of Sierra Leone for the African Group and of Barbados for the CARICOM. We welcome the early appointment of the IGN co-chairs and offer our felicitations to Ambassador Wawrinka, Permanent Representative of Poland, and Ambassador Al-Thani, Permanent Representative of Qatar. Mr. President, today's Security Council is an impaired organ. It has been unable to act with credibility, essentially due to its unrepresentative nature. But then, what is happening inside the IGN process, which we seem to be wedded to? Inside the IGN, nothing has moved for more than a decade, except hearing passionate statements on the need for reform. In fact, it has not progressed, since it is not only informal, but it has no rules of procedure and has no records. For a decade, it has remained that way. We are forced to keep our own notes, placing a tremendous burden on all small and medium states. The same countries who shed crocodile tears for small and medium states are the same ones denying them even the basic courtesy, which is to help them keep official record of discussions. What happens here is no record, and we start again the next year as if nothing has happened. And of course, we don't even have a single negotiating text. IGN has become like a platform for debate in a university rather than a serious result-oriented process in the United Nations consisting of sovereign member states. And why have we come to this pass? That's because just a handful of countries don't want us to proceed. They have stopped the IGN from progressing. They are using the IGN as a smokescreen to stop themselves from being identified by paying lip service to Security Council reform. The conditions they are laying out are impossible to fulfill, which is full consensus of all member states. Ironically, this is happening at a time when we are in a tearing hurry last week to give ourselves e-voting rights. But for the IGN, they want no voting, leave alone e-voting, but only full consensus. In fact, we are even apprehensive of using the words adopted unanimously by our own leaders in the UN at 75 high-level political declaration. There is no mention of the words instill new life in the discussions on the reform of the UN Security Council in the letter of the PGA, which gives the mandate to the co-facilitators. I do hope that we have not started distancing ourselves from the UN at 75 declaration even before the ink is dry. Talking about leaders, during the general debate, you have heard the chorus of world leaders calling for urgent reform of the multilateral decision-making structures, especially the Security Council. Prime Minister Modi, echoing the aspirations over 1 billion of my fellow citizens, asked, when will this reform process ever reach its logical conclusion? The question we are still asking here in IGN today is, when will the reform process ever begin? So what should constitute progress by the time 75th session ends? Firstly, we want the application of the General Assembly rules of procedure to the IGN to bring about an open, inclusive, and transparent process. Secondly, we call for text-based negotiations to start. A text reflecting all positions and proposals from member states will be necessary to make progress. Thirdly, let us reaffirm our firm support
for the common African position as specified in the Esselwini Consensus and Sirte Declaration. In the last summit of the non-aligned movement, 120 NAM leaders for the first time added their voice of support to the common African position. Let us not sidetrack this discussion by asking for greater representation only for Africa, but we need to ask for greater representation for all those who deserve to be in the Security Council, including Africa, Latin America, and others. For this, we need a serious and credible process. On the issue of substance, while India's position is well known, let me repeat here for the sake of record. We believe that the vast majority of member states are, like us, in favor of expansion in both permanent and non-permanent categories of membership of the Security Council. जैसा कि आपने सुना, बहुत बोल्डली आक्रामक अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी और भारत ये ऐसे मौके पर सवाल उठा रहा है जब वाकई में ऐसी संस्थाओं में और उसकी सदस्यता में तब्दीली की ज़रूरत है। अगले साल से भारत अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए बनने जा रहा है, लेकिन कब तक भारत जैसा देश 135 करोड़ की आबादी वाला देश जो है वो अस्थायी सदस्य बनेगा, परमानेंट सदस्य कब बनेगा? ये सवाल उठ रहा है कि जो यूएनएससी है यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसमें जो जिन देशों को इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उनको समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। सिर्फ 5 ही देश यूएनएससी के सदस्य हैं, उसमें है अमेरिका है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। भारत जैसा देश, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और बहुत सारे देश हो सकते हैं कि उसकी सदस्य संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है और जिस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारत की सदस्यता में सबसे बड़ी अड़ंगेबाजी जो कर रहा है वो कर रहा है चीन। तो ये कब तक अड़ंगेबाजी चलेगी? तो विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने आक्रामक होकर के जो तरीका अपनाया है, पहले सोचता था कि दूसरे देश बात रखे, लेकिन अब भारत खुद अपनी बात रख रहा है और ये नहीं कर रहा है कि हमारी आबादी ज़्यादा है इसलिए, बल्कि हम इसके हकदार हैं ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए, अदरवाइज साख पे प्रभाव पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि क्या इसका असर होता है। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और